the gyro compass directly because there is nothing fixed there. So we take not the fixed one, but change over a period of time. And for that, rate of turn indicator is required. थोड़ी सी बेसिक्स भी बात करी थी, रिक्वायरमेंट्स बात किया था, क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसमें. Starboard turn, port turn has to be clearly defined. How the numbering is to be done. Analog हो सकता है, digital हो सकता है, integrated with the steering system हो सकता है, और stand alone हो सकता है, अलग हो सकता है. So all those things we talked about. Rate of turn indicator में जो सबसे important questions हैं, they are basically planning, execution and monitoring. तो question आ सकता है, planning the turn around radar object and turning with constant radius or constant ROT. Second, planning the turn with around imaginary object and execution constant ROT or constant radius. दोनों भी हो सकते. And then monitoring. अगर radar object है तो कैसे monitor करेंगे, अगर imaginary point है तो कैसे monitor करेंगे. Basically, when imaginary point, the most primitive kind of method that can be used is plotting position continuously to see whether we are on track or not. But this method was when we did not have very smart systems like, you know, the advanced kind of radar systems, ARPA system. In the present day, the radar, ARPA, they have mapping facility, they have got off-center VRM facility, all those things make it much easier. So we can drop an object at the imaginary point, low, ho gaya ek object which I can see on the radar. So then turn becomes much easier. Or in any case, we can off center to that point, the VRM का center को हम उस point पे imaginary point पे डाल देंगे. Then the VRM का curve जो है उसके ऊपर जहाज को लेके चलना है. We just keep on watching whether we are on VRM or not. Are you able to follow what we are talking about, Apurva? Yes, sir. Are you following what we are saying? Yes, sir. Pakka? Yes, sir. Okay, so VRM off center ये सब जो radar की facilities हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी है आप लोगों को? Chevron? सिन्हा सर, Yes, क्लास sir, आपकी yes, है sir. मेरी है. सिन्हा सर, गुड मॉर्निंग. Sir, good morning, sir. सर, क्लास आपकी है मेरी है? मेरी है सर, मेरे ख्याल से. बच्चों बताओ किसकी क्लास है? सर प्रसून सर आपकी. मेरी है सर. सर आपने इनको घूस खिला रखी है क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. देखिए वोट मिल गया मुझको सर. गुड मॉर्निंग सर. अच्छा, गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, नहीं मैं फेज 2 में है मेरे को. चलो, मेरे आपकी बात है. बच्चों को खूब गुड मॉर्निंग बोलता हूँ ना, इसलिए लगता है खुश रहते हैं मेरे से. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी, गुड मॉर्निंग. चलो, ओके, मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं बाद में आता हूँ. राइट सर, राइट. थैंक यू. Thank you. All right, so this is the most important questions: planning, execution and monitoring. Apart from this, there are few things which we must be aware of. Coming to the last part of the topic, what are the things that should be kept in mind when doing this turn? When turning the vessel, what are the things to keep in mind? Keshav, ROT is equal to? Sir, V upon R. V upon R. What is this V? We know that V is speed through water, speed over ground both. So which V we are talking about? Water. Should it be speed through water or speed over ground? Sir, through water. Through water, sir. Through water. Through water. Everybody says through water. Agreed? Sir. Okay. Now suppose I am going into the turn, entry point. Turn पे enter कर रहा हूँ. Let us assume that I am
doing 6 knots forward, engine speed 6 knots, and there is a current 6 knots opposite. That means in water I am doing 6 knots of speed. Correct? Yes, sir. Going forward 6 knots, current opposite 6 knots. So on the ground, will I be stationary or not? Yes, sir. तो अगर 6 नॉट की स्पीड हम कर रहे हैं, स्पीड थ्रू वाटर, 6 नॉट से हम जा रहे हैं, 6 नॉट से वापस करंट है, will I ever be able to complete the turn? No, sir. तो टर्न तो वो है जो यहाँ से वहां खत्म होती है ना, एक लैट लॉन्ग पे शुरू होता है, दूसरे लैट लॉन्ग पे खत्म होता है. That's this turn is over the ground, isn't it? Getting my point? कंफ्यूजन है तो फिर से बोलो. आदित्य, सर एक बार और बता दीजिए प्लीज. okay, we'll go to the board. सर लेकिन करंट ना दूसरी डायरेक्शन में लेके बताइए सर. एक सेकंड. जसवीर गाड़ी में घूम रहा है. जसवीर, वन सेकंड. What we are saying that we are turning like this. The turn starts here, it finishes here. The distance that we had calculated was this, and v that we had calculated for this distance, the time that we have taken out to cover the distance d at the speed of v was because of this distance, right? Yes, sir. डेरिवेशन, जो डेरिवेशन करी थी हमने, टाइम निकाला था ना. Yes, sir. तो टाइम किसके लिए निकाला था? जितना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा, इट इज अ फिजिकल डिस्टेंस. इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. That means the v to cover this distance will be SOG or not? अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 6 नॉट से इधर और ऑपोजिट 6 नॉट का करंट है, तो मैं तो यही रह जाऊंगा हमेशा, क्योंकि जितना आगे जाता हूँ उतना पीछे आता है. जैसे ट्रेडमिल पे चलते हैं, हम आगे जाते हैं, बेल्ट पीछे जाती है, हम वहीं खड़े रहते हैं दीवार के साथ ही, तो हमारा तो टर्न कभी खत्म होएगा नहीं, टी तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर. So basically, point number 1 in consideration is that for calculation of ROT, SOG should be taken. Number 1. Number 2, when we are turning like this, let us say one case the ship goes inside, ROT ज्यादा हो गया. दूसरा केस when ROT is less, बाहर चले गए. Now tell me, from here to here will be easy or from here to here it will be easy? कहने का मतलब क्या कि ROT अगर ज्यादा हो चुका है तो बाहर लाना आसान होगा, या बाहर चला गया हो तो भीतर लाना, ROT बढ़ाना आसान होगा. Which one is going to be easy? सर बढ़ाना आसान होगा. आरओटी कम करना. बढ़ाना. ROT कम करना आसान होगा.
जहाज वैसे ही सीधे चलने के मूड में रहती है। मोमेंटम कहता है कि जो जहां पे जा रहा है उधर ही चलता रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे मुड़ते हुए मिडशिप भी कर दे तो धीरे धीरे करके वो सीधी हो जाएगी, और उसमें हमने उल्टा अगर दे दिया तब तो और तेजी से भागेगी। सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट दिस सिचुएशन इज बेटर देन दिस सिचुएशन, क्योंकि मोमेंटम से ये इधर को जाता है, मैं रडर देता हूं तो नहीं मुड़ती है, बहुत मुश्किल से मुड़ता है इधर को। सो आरओटी शुड बी ओवर कैलकुलेटेड, ज्यादा आरओटी लेके चलिए तो कम करना, यहाँ पे जाना आसान होगा, रादर देन कि हम बाहर चले गए अब उसको खींच के वापस लाना है ट्रैक पे, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट। सो सेकंड पॉइंट इज दैट आरओटी should be over calculated. It should be over calculated rather than under calculated. कम नहीं कैलकुलेट करना है, जितना दिख रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रखिए आरओटी। अगर भीतर चले गए तो बाहर ले जाना जहाज को आसान होएगा। पॉइंट नंबर 3, when turning with constant radius, speed should be monitored very closely. Because we know in order to maintain the radius constant, we have to keep on changing the ROT as per dropping speed of the ship. Remember that when the ship is turning, the speed begins to drop. If we want to maintain the radius, constant, if V is changing, I must also change ROT in order to get a constant result. So when turning with constant radius, speed should be very closely monitored and ROT should be recalculated. Recalculated for dropping speed of the ship. Point number 4, when turning with constant ROT, monitoring should be done properly because we are taking, यहाँ पे अगर ROT is equal to क्या है यहाँ पे, when turning with constant ROT is equal to Sir, V upon R. negative, Average speed upon R. yes, average V divided by R. So this average is an estimation only. मुझको क्या मालूम कि यहाँ पे और वहां पे जाके कितना ड्रॉप हो जाएगा. It is only the experience of the master, experience in other ships, experience on this ship, that the speed drop estimation is done. So इस estimation में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है. तो जो हमने आरओटी कैलकुलेट करी है एवरेज स्पीड लेके, वो हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो. तो मॉनिटरिंग हमें अच्छे से करना है. मॉनिटरिंग शुड बी डन प्रॉपरली so that if the vessel is turning inside more, then we can take it out. If she is going out, then we can bring her in. So idea here is monitoring should be done
accurately. These are some considerations about rate of turn indicator and the use, or rather precautions to be had in mind when we are using rate of turn indicator or when turning around the taking a large alteration basically. So we'll take a look at all these points once again. Let me sit down. सर 1 मिनट में पॉइंट नंबर 4 दिखा दीजिएगा प्लीज. एक सेकंड. Let me see. Okay, write down point number 4. हाँ सर. Okay, point number 4 is when turning with constant ROT. When turning with constant ROT, comma, Yes sir. the turn should be monitored very closely. The turn should be monitored very closely because in this case, the ROT is calculated. The ROT is calculated on the basis of average speed, on the basis of average speed of the ship during the turn. Average speed of the ship during the turn. Full stop. This average speed is only an estimation. Is only an estimation. Come again. किसी ने कुछ कहा? तो आपकी की आवाज रिपीट हुई थी. अच्छा. So what have you written? Please read the full sentence. I mean from top to bottom. When turning with constant ROT, the turn should be monitored very closely because in this case the ROT is calculated on the basis of average speed of the ship. नहीं सुनाई पड़ रहा. ठीक से बोलो. माइक्रोफोन नजदीक रखो. When turning with constant ROT, the turn should be monitored very closely because in this case the ROT is calculated on the basis of average speed of the ship during the turn. Thus, average speed is only an estimation. Okay. मुन्ना फिर हो गया मोटर का बटन चालू क्रिएट हुआ मैं तो की कौन सुने Some background noise coming. Okay. हां फिर लाइट तो इसको चालू छोड़ो थे Is only an estimation which may be little inaccurate. Which may be little inaccurate. That should be okay. इतना हो गया. Okay, let us go to the slide. We will take a look at this once again. All right, so this we have seen, we have done
ये सब कर लिया था ना हमने। This was wheel over point and wheel over line. Okay, so this is was done. Oh, इसमें नहीं है. All right. जो points of consideration थे, precautions to be had, precautions when using ROT. कौन Hello? पीछे background noise में बोल रहा है भाई? माइक्रोफोन ऑफ कर लो. ठीक है? So points of consideration or precautions when using a rate of turn. These are what you are seeing, the advantages of rate of turn indicator or wheel over point basically. What are the advantages? कल की बात हमने करी थी. What are the advantages of wheel over point? हम जब बनाते हैं वो line draw करते हैं, wheel over line, फिर wheel over point पता करते हैं. What are the benefits? So write down advantages of wheel over point. Please write it down. अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो पूछिए. XTE मतलब क्रॉस ट्रैक एरर. एनीवे you ask. सर ये रिफ्लेक्शन टोटल क्या है? ऑब्सोलीट हो गया, छोड़ दो उसको, तो काट भी दो. डोंट राइट दैट. ओके सर. नेक्स्ट. सर ये कैलकुलेट करने के लिए भी आता है क्या व्हील ओवर पॉइंट एग्जाम में? नहीं, आपको सिर्फ थ्योरी लिखना है और फॉर्मूला लिख देना है. डेरिवेशन भी नहीं आएगा आपको. डेरिवेशन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है इसलिए अब बताया है. थैंक यू सर.
Finished? Yes, sir. Okay. So coming back. Now, what are the topics that we have finished already? List out. बनवास, VDR, LRIT. Doppler log, electromagnetic log, Yeah, yes. ROT, GPS. ROT, gyroscope, Compass. gyrocompass, Or coach. So Nice, let sir. us note down what are the things remaining. We have echo sounder, Magnetic compass. magnetic compass, autopilot, ECDIS, INS, IBS. INS, IBS. और coach? सर सेक्सटेंट तो दूसरे सर करा रहे हैं. हाँ, वो तिवारी सर करवाएंगे. अभी जो सर आए थे तो नवीन तिवारी सर वो करवाएंगे. तो ये 4 टॉपिक रहती है, करेक्ट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we start the new topic. What would you like to study? Autopilot? Yes, sir. Okay. What is autopilot? In order to understand autopilot, पहले कहानी समझते हैं कि ये चीज क्या है, क्यों यूज होता है, बेनिफिट्स क्या है. Everything that we use on board ship or anywhere has to give me some kind of benefit, then only we use it. All of you have been engaged in steering the vessel. सभी लोगों ने steer किया. Yes, sir. Put yourself onto the wheel now. Imagine that you are standing in front of the wheel. आप steer कर रहे हैं. एक situation है. Captain is there. He is conning the vessel, and you are at the wheel. You hear suddenly master speaking, all right, come to 250. What is your reaction? जैसे ही 250 सुनते हैं तो पहला चीज आप क्या होता है, आप जवाब तो देते हैं सर 250 नजर जाएगी सर. इमीडिएटली आपका नजर जाता है कि मैं जैरो कहाँ पे हूं अभी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप देखते हैं कि मैं 225 पे हूं. इमीडिएट एक कैलकुलेशन होता है दिमाग में, अच्छा 225 है, 250 जाना है, 25 डिग्री का ऑल्टरेशन है. कैलकुलेट होता है यहाँ. Yes, sir. Sir. आप डिसाइड करते हैं कि 25 डिग्री का ऑल्टरेशन ज्यादा ऑल्टरेशन है, तो मुझको रडर थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, जल्दी घूमना है. तो बेसिस द डिफरेंस बिटवीन द टू हेडिंग्स, एक जो कर रहे हैं और एक जो जाना है, उसके बेसिस पे आप रडर अप्लाई करते. क्योंकि 25 डिग्री का ऑल्टरेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा ज्यादा 10-15 डिग्रीज का आप रडर देते. When you are giving this rudder, do you notice that आपके दिमाग में एक और इनपुट चल रहा होता है कि भाई जहाज तो लोडेड है अभी, और लोडेड कंडीशन में जहाज जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो चलती Yes, जाती sir. है. So another input that is coming to your mind is, okay, now I'm loaded, the vessel will not be steering so well, so 15 नहीं 20 डिग्रीज दे देता हूं. Yes, sir. तो आपने 20 डिग्रीज का रडर दे दिया. Then what you do? You keep on watching the gyro. Is it changing? Is it changing? Is it changing?
When the vessel starts to swing after reaction distance, when the vessel starts to swing, you keep on watching that rate of swing कि हाँ हो तो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. अगर धीरे धीरे हो रहा है तो आप रडर दिए रहते हैं. बट जैसे स्विंग शुरू होता है और 0225 से 223035 तक जाने लगता है, बढ़ने लगता है, तो आप ईज ऑफ करते हैं रडर को. जब 240 पे चला जाता है तो आप मिडशिप कर देते हैं. जहाज अपने मोमेंटम में थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी के चलते घूमता जाता है. देन यू वॉच कि इस रेट से तो लगता है मैं स्विंग करके ज्यादा आगे निकल जाऊं. तो व्हाट यू डू, Sir, व्हाट इज counter डायरेक्शन? Opposite rudder. काउंटर. opposite direction. सो आप काउंटर रडर देते हैं in order to stabilize the vessel on 250. But when you were doing all this, not only the loading condition, but also the speed of the ship was in your mind. Remember that when the speed is going very fast, थोड़ा सा रडर देते ही रिएक्ट करता है जहाज. लेकिन वही अगर स्लो शिप है गोइंग 5, 6 नॉट 7 नॉट्स, तो आप रडर देते हैं, जहाज हिलता नहीं. So another input is also the speed of the ship. That means at slow speed maneuvering is less effective, तो आपको और ज्यादा रडर देना होगा. अगर जहाज तेज चल रही है तो थोड़ा कम देंगे. So loaded vessel, more rudder. Slow speed, more rudder. And opposite, slow, faster speed and light vessel, less rudder. मैनोवरिंग हो जाएगी. और उसमें आप कंपैरिजन करते हैं दोनों चीजों के बीच. जब आप ये स्टीयरिंग कर रहे थे तो बगल में कुछ एक जहाज जा रही थी, कुछ हॉर्न बजाया तो आप उधर देखने लगते. इस समय दिमाग हट गया आपके जायरो से. Your job that you were doing, you got distracted because of something else. Maybe somebody called your name. आपको दे, हाँ जी बोलो. So all that you have been doing is basically a, all calculations happening in your mind, and on the basis of that you are giving the wheel to starboard because you had to go from 225 to 250. So mind was here, how to steer was here, and when you have decided everything, you give helm. The moment you give helm, the rudder gets operated and it is shifted to starboard side and the vessel starts turning. So autopilot system is basically the mind behind the steering. The autopilot system is the mind which you were doing. जो चीजें आप कर रहे थे, जो आपने देखा कि जारो कितना है 225, बोला कितना कप्तान ने 250, कंपैरिजन किया किसने, आपने इनपुट लिया किस बात का, स्पीड कितनी है जहाज की. आपने इनपुट लिया किस बात का, वेदर लोडेड और स्लो, लोडेड और लाइट कंडीशन. आपने इनपुट लिया किसका, विंड है क्या, करंट है क्या. All things considered, then you have operated the wheel, and after the operation of wheel, the rudder operates. So the autopilot system is a computer basically which takes input of all kinds, all the kinds that we were talking about right now. And on the basis of all the inputs, it decides
मुझको इतना रडर देना है, देन इट सेंड्स अ कमांड टू द स्टीयरिंग कि भाई रडर को मूव करो 15 डिग्री स्टारबोर्ड। और जैसे ही वो आने लगता है, स्विंग करने लगता है, ऑटो पायलट कीप्स ऑन वॉचिंग वेदर इट इज स्विंगिंग और नॉट। यस, स्विंगिंग। इफ इट इज स्विंगिंग, हाउ फास्ट? If it is fast swinging, then the rudder is brought to midship. It also watches that at this rate, am I going to overshoot? Looks like yes, I can overshoot. Counter rudder. So everything that as a human being you were doing, the same thing is done by the autopilot system, the computer of the autopilot. Only one thing, that the autopilot will not get distracted if there is a ship there or somebody is calling, hey autopilot. It does not respond to that. So it keeps on doing the job that it is doing. So autopilot system is doing the same kind of jobs that we do, but it does in a more efficient manner. You can appreciate this point, that the same shape, same conditions, if I steer, I will be doing something like this. When you do, you will be doing something little different. मेरे ख्याल से अगर मैं 10 डिग्री स्टारबोर्ड हेल्म दे रहा हूं, आप हो सकता है 15 दें, या आप अगर 20 देते हैं तो मैं 25 दूं. There can be difference. So from person to person it may change. Conditions वही थी, तो हमारे रिस्पांस जो हमने एक्शन लिया है उसका रिस्पांस अलग अलग होएगा. जहाज जल्दी आएगी ट्रैक पे, या देर से आएगी, या ओवरशूट ज्यादा करेगा, आपसे ज्यादा करेगा, मेरे से कम करेगा. मुझको हो सकता है ज्यादा टाइम लगे अपने ट्रैक पे लेके आने के लिए, आप जल्दी लेके आ जाएं. So the human factor makes it little, there are so many combinations that develop. Autopilot system is not like that. Autopilot system, in a given condition, given kind of results, given kind of action, and steering will be in the similar fashion. So when we are going on a long journey from one waypoint to the other waypoint, when we have to do a straight course for a long period of time, where alteration is not required, we just have to keep the course. In that case, autopilot is more efficient because there will be minimum of deviation from the course. If we keep on going like this, so in the end, the total distance done becomes more. अगर snaky movement कर रहे हैं, so the time taken to do the same distance will be more because we haven't gone straight, we have gone like this. जो human steering में होता है, manual steering में होता है. But autopilot system does it better, minimum of deviation, and so the ETA made will be very good. Since ETA is good, less time taken. Less time taken, that means engine running for less time, meaning less fuel consumption, meaning efficiency of the vessel is more, meaning more profits for the company. So all these things considered, this is an autopilot system, is the system of steering the ship as per the given situation. So it is used mostly
when we don't have to alter the course. We are maintaining the same course for a long period of time. All of you must have had the experience that the autopilot system has got a knob जिसमें आप कोर्स टू स्टीयर सेटिंग करते हैं. Is that correct? Yes, sir. So आपने उसको 250 पे करा. The knob you have turned to 250 when the gyro was actually reading 225, for example. After doing this 250 and when the ship was actually doing 225, you engage the autopilot. The moment you are switching on the autopilot, immediately the autopilot system will obtain input from the gyro, right now 225. That 225 will be converted into an electronic voltage. एक signal आएगा 225, corresponding to 225 there will be a value that the autopilot will receive. Input आया 225. It will also receive an input from course setting, जो knob आपने 250 पे रखा है, उसका इनपुट, that is another voltage. For example, एक 10 वोल्ट था, एक 15 वोल्ट था, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस निकलेगा. How much difference? How much difference? 25. 5 volt. Now this 5 volt can be plus 5 volt or minus 5 volt. 225 or 250 minus 225, or it can also be 225 or 250 minus so and so. So depending कि आपकी कोर सेटिंग अगर इस तरफ को है 225 की जगह 200 है तो वो माइनस वोल्टेज आ जाएगा. सो माइनस प्लस वोल्टेज से स्टारबोर्ड और पोर्ट सेट होता है. वैल्यू से डिफरेंस बिटवीन द टू, what is obtained is the difference between the two headings, current and the two steer. And on the basis of this 0.5 volt, or sorry, 5 volt plus or minus, the rudder is operated. When the vessel starts to move, वो 250 तो रहेगा ही, लेकिन ये 225 था, वो चेंज होना शुरू होगा. करेक्ट? 230, 235, 240, 245, 250. जैसे जैसे ये चेंज होगा तो दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है. वोल्टेज की वैल्यू जो डिफरेंस थी 5 वोल्ट, वो भी कम होना शुरू होगा. Yes, sir. Yes. तो जब कम होना शुरू होगा तो रडर भी कम होना शुरू होगा. जब दोनों मैच कर जाएंगे तो रडर मिडशिप. जहाज हो गई सेट, सीधे कोर्स 250 पे जहाज चल रहा है. अब जहाज अगर जायरो उसका 255 जा रहा है तो फिर से माइनस जाएगा, -1 वोल्ट क्रिएट होगा कि भाई ज्यादा चला गया, वापस पोर्ट में देगा थोड़ा सा रडर ताकि उसको फिर से वापस 250. So this is the general philosophy of autopilot system. All is electronic. Various inputs are obtained by the autopilot system, makes a comparison, and on the basis of an error voltage, जो comparison करते हैं, difference निकालते हैं, something called error voltage. That error voltage can be positive, can be negative, as we have seen. Based on that error voltage, the rudder is operated.
बट सिर्फ इस वोल्टेज से ही ऑपरेट नहीं होगा, रडर की अभी कहां पोजीशन है वो भी डिपेंड करता है. So another input is also collected from the rudder angle indicator. For example, जैसा अभी हम देख रहे थे कि 225 जाना है, अंदर 225 कर रहे हैं, 250 जाना है, तो इसके बेसिस पे 5 वोल्ट का डिफरेंस आया. इस 5 वोल्ट के डिफरेंस के लिए मुझको 10 डिग्रीज का स्टारबोर्ड हेल्म देना है. 10 डिग्रीज का हेल्म जो देना है, लेकिन ऑलरेडी 3 डिग्रीज ऑलरेडी है. The rudder is already at 3 degrees starboard. So how much should be given? How much more 7. required? 70. 7. So not only those two inputs, present course, course to steer, not only that, but into that there is another third input कि अभी already कहाँ पे है. If it was in port, मान लो 3 डिग्री पोर्ट में था, तो वो स्टारबोर्ड में 10 लाने के लिए 13 देना पड़ेगा. Already starboard 3 में था, तो only 7 will be required. If it was midship, then 10 degrees required. So this is what is the philosophy of the autopilot system. Some questions? Any questions on this? या कहानी समझ में आ रही है? Yes. सर थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत नहीं भी आया. क्या हुआ? क्या हुआ? सर थोड़ी चीजें समझ में आई, थोड़ी नहीं भी आई सर. तो बताओ ना, वही तो बताओ कि क्या चीज अगर कोई पिन पॉइंट कर पाए हो कि व्हाट इज दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये क्या सर ने बोला, तो प्लीज आस्क मी. सर वो वोल्टेज वाला सर थोड़ा फिर से बता दिए. कौन सा? सर वो जो वोल्टेज प्लस माइनस वोल्टेज वाला बोल रहे हैं. वो अभी जा रहे हैं, वो अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी बोर्ड पे आ रहे हैं. ये तो अभी कहानी में बताया, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वन सेकेंड. सर ये नया टॉपिक फुल फोर्स से मंडे से चालू करते हैं ना. अभी से करते हैं. 10 सर मिनट रह अब गया है. तो 10 ही मिनट. यस सर, जो मंडे से philosophy करते हैं है सर. इसका, ऑटो पायलट का फिलॉसफी है उतना बता देते हैं ना. ये वाला ये शैतानी नहीं चलेगी. मंडे से करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं चलेगा. जहां जितना अभी जो हमने जितना बात किया उसको सिर्फ समझ लेते हैं. We talk only Okay, about- sir. नहीं नहीं, ये वोल्टेज वाला समझ लेते हैं. मान लो जायरो कंपास इज हियर रीडिंग 225. आपने कोर्स सेटिंग कर दी इसकी 250 पे. This value is converted into a voltage. Let us say this is 225 volt, for example. This is an electrical signal, for example. And this 250 is also a signal which is 250 volt. Autopilot system में एक comparison के लिए एक सर्किट होती है. इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आता है 25 वोल्ट का. दोनों वोल्टेज को जब कंपेयर किया आपस में, सो दिस इज 25 वोल्ट. दिस 25 वोल्ट इज कॉल्ड एरर वोल्टेज. This error voltage is what operates the rudder. That means when the ship is going like this, 2 to 5,
और एरर वोल्टेज मिलती है ऑटो पायलट सिस्टम से कि 25 वोल्ट का डिफरेंस है, then it will try to give rudder whatever degrees. When it is given, it starts to swing, becomes 26, then 27, then 30. ये जहाज घूमना शुरू हो रहा है. When it is 230, this will become 230. So what is the error voltage now? 20. 20. So the rudder will be reduced little bit, not for 25 volt, but now for 20 volt. When it goes, the ship goes 240. The input voltage to the autopilot is getting 240. What is the difference? 10. So the error voltage becomes 10 volt and the rudder is brought to less. When this finally reaches 250, this input, heading input given to the autopilot is 250. What is the difference between the two? Comparison से क्या निकलेगा? 0. So this is 0 volt. The rudder is brought to midship. So in autopilot system, this is what is happening in general. ऐसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, but in general इतना ही होता है. जो heading information है, that is converted into a voltage. जो course steer करना है, CTS, that also gets converted to a voltage. There is a comparison between the two to find out the error voltage. Of course, जो अभी हमने simplify करने के लिए बात नहीं किया, वो ये था कि rudder angle indicator भी होता है, इसका भी input जाता है. So इन तीनों के फाइनल से पता चलता है कि कितना रडर देना है. जैसे जैसे एरर कम होएगा, ये रडर भी कम होता जाए. जब एरर 0 हो जाएगी तो रडर विल बी मिड. And so now the vessel will steer on this. It is not so simple. There is more to it, but we will see in the next class. Okay, sir. Thank you. Understood? Thank you, sir. Okay. So अगले क्लास में आप लोग ऑटो पायलट पढ़ के आएंगे. नहीं Yes, समझ sir. में आता है कोई बात नहीं, बट एक रीडिंग जरूर देना होगा आपको अगले ही क्लास में. लंच के बाद है. सर ये कितने क्लास का टॉपिक है? ये 3 क्लास. ओके सर. Thank you, sir. Thank you, sir. So we meet after lunch. After lunch 2:30 we have the class. लंच में थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा ऑटो पायलट के बारे में, नोट्स में पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे समझ में आएगा और अच्छे से आएगा. ठीक है? ओके सर. Okay, sir. चलो चलो थोड़ा 4 मिनट पहले ब्रेक मिल गया. Thank चलो you, साइनिंग sir. ऑफ. चलो बाय बाय. साइनिंग ऑफ. Thank you, sir.